हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ये है फाइनल पार्ट इस ट्यूटोरियल का। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे इस पोर्ट्रेट को। सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ईयर के पास वाले एरिया को ड्रॉ करना सबसे पहले। तो अभी जो मैं एरिया ड्रॉ कर रही हूँ वो वाला एरिया बहुत ज्यादा डार्क है, आप देख रहे होंगे रेफरेंस फोटो में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यूज कर रही हूँ 2B पेंसिल का फर्स्ट लेयर देने के लिए। यहाँ पर भी हम लोग लेयर बाय लेयर शेडिंग करेंगे। डार्क एरिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम डायरेक्ट डार्क पेंसिल का यूज कर दे। लेयर बाय लेयर शेडिंग करेंगे तभी स्मूथ टेक्सचर आएगा वहाँ पे। इसलिए मैंने सबसे पहले 2B पेंसिल की लेयर दी, उसके बाद मैं यहाँ पे 10B पेंसिल की लेयर दे रही हूँ। 2B पेंसिल की लेयर देने के बाद सेकंड लेयर दे रही हूँ मैं यहाँ पे 10B पेंसिल से। और जब तक मुझे उतनी डार्कनेस नहीं मिल जाती जितनी डार्कनेस रेफरेंस फोटो में है, तब तक मैं यहाँ पे लेयर्स ऐड करूंगी। और बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ मैं यहाँ पे लेयर्स ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल भी हार्ड प्रेशर का अप्लाई नहीं कर रही हूँ। भले आपको 2-3 लेयर एक्स्ट्रा देनी पड़े, लेकिन आप लाइट प्रेशर का ही अप्लाई करके शेडिंग करें, तभी आपका स्मूथ टेक्सचर आएगा। और मैं ब्लेंडिंग के लिए यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टम्प एंड ब्रश का यूज कर रही हूँ, मेकअप ब्रश का। और यहाँ पर अब मैं ईयर को ड्रॉ कर रही हूँ। सबसे पहले 2B पेंसिल का यूज करके डार्क एरिया को कवर कर रही हूँ। उसके बाद मैं 10B पेंसिल का यूज करूंगी और डार्क करने के लिए डार्क एरिया को। और हाइलाइट्स के लिए मैं मैकेनिकल इरेजर का यूज कर रही हूँ और व्हाइट जेल पेन का यूज कर रही हूँ। और इसी तरीके से मैं नेक वाले एरिया को भी ड्रॉ कर लूंगी, जिस तरह से मैंने वो डार्क वाला एरिया कवर किया है। सबसे पहले 2B पेंसिल का यूज करके फर्स्ट लेयर दे रही हूँ मैं नेक में, और फिर 10B पेंसिल का यूज करूंगी डार्क एरिया कवर करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए वीडियो में मैं किस तरीके से शेडिंग कर रही हूँ। Sound right, boy. It sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy. It sound right, boys. और अब यहाँ पे मैं शोल्डर वाले एरिया को कवर कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं डार्क एरिया को कवर कर रही हूँ यहाँ पे। और हाइलाइट्स आप देख रहे होंगे किस तरीके के हैं शोल्डर में, वहाँ पे मैं शेडिंग नहीं करूंगी, ओनली डार्क एरिया में शेडिंग करूंगी यहाँ पे मैं। और हाईलाइटेड वाले एरिया में मैं व्हाइट जेल पेन का भी यूज करूंगी आगे। तो आप लोग वीडियो में ऑब्जर्व कीजिए मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। मिलते हैं फिर कंप्लीट करने के बाद। sound right, boy.
it sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy. It sound right, boys. It sound right, boys. तो फ्रेंड्स पोर्ट्रेट हमारा कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग किस तरीके का बना है। सो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को पोर्ट्रेट पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।